जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जनरल नारायण को आज मैं खींच के लेके आया हूँ लिटरली कि सब समझाओ हो क्या रहा है। 3-4 शोज कर लिए हमने, वी टेकन अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, बट देखिए यार, एक पीछे की गेम जो होती है, और पीछे की गेम तब निकलती है जब डेफ टॉक्स में सर के साथ बैठने को मिलता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द बैक गेम इज। देखो, हर चीज का एक बैक स्टोरी होती है जो दुनिया में पता नहीं चलती है, वो डॉट कनेक्टिंग, and there's no one better. Sir, namaskar, good evening, welcome to the show. Namaskar, Jai Bharati, thank you. Yes, it is a big game, and that's why I call it the new great game. It's not happened overnight, as we were talking. It's been at least more than a year. But what has changed is actually the evolving global order. And the center of gravity shifting towards India, and the stability that was coming in the Middle East with the thawing of relations between the Arab countries and Israel. And then, of course, the IMEC and G20 and others, because IMEC, more than Europe, would have been the lifeline for the development of the Arab countries in the Middle East to go beyond being only an energy resource country. Because अगले 10-1 साल के अंदर ऑयल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा जब मोर एंड मोर कंट्री स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. Whatever be the controversy about green energy, that back end it's not that environment friendly, but वो तूर पकड़ चुका है. और जैसे वहां जाओगे आप, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे. And suddenly the rogue nations realize that they are going to lose their importance, and the rogue structure of the extreme leftists कि भाई साहब हम तो खत्म हो गए, because they are the ones who have been providing the lifeline and voice for most of the militant organizations. इनका ही, हाँ, बैक एंड सपोर्ट. Yes, back end support. अभी आप इसको ही देख लो, जस्टिन ट्रूडो. What's the point in talking to the Saudi when you're permitting people to come out in flags in streets in Canada, and they are shouting all kinds of things and Allahu Akbar and being happy that this is the kind of barbaric attack that has taken place. आपने उनको रोका. इंडिया में हुआ उनका तो अगेंस्ट तो FIR दर्ज होने लगे अब, that how are you supporting the barbaric act. तो सन्नाटा हो गया अभी सडनली AMU के अंदर. Have they done that? They've not done that. तो उसके बाद बोलने से क्या है? It doesn't make a difference because he is himself an extreme leftist. So within the ecosystem, firstly within the Anglo-Saxon grouping is finding it difficult to survive. Ecosystem within and they were creating various incidents, and I might give a different light and twist into what is going on. सर वही तो करना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो मेरे को पूछनी है सर कि आपने 2 कैटेगराइजेशन करी है अभी यहीं पर ही. एक है रोग स्टेट्स, आपने एक नाम लिया जो बिल्कुल ठीक है, एक वो है. दूसरा आपने नाम लिया सर दी अदर्स. यस. अब जरा ये बताइए ये क्या है सर? ये है एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जिनको लोग लिबरल्स बोलते हैं. आई डोंट कॉल देम लिबरल्स because anyone who is anti them, they call them rightists. So then for me, you are a leftist. You are an extreme leftist. Some people use the word liberandos. They call themselves liberalists. They are not liberal in any way.
because they're not ready to listen to a contrarian point of view. हाँ, They सुनना will नहीं है. If hound you you say and something, shut you you're down, हाँ. right? So a liberal is a person who accepts all views. So you're not liberal by any standards of any dictionary meaning of a liberal. So you're not a liberal. You're an extreme rightist behaving exactly like a communist chap. There's only my way, it's my way or the highway. So that's why I call them extreme leftists. उनको तो ये तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से भी लेफ्ट लीनिंग होंगे. तो ये ग्रुप है और उनका इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट कर रखा है. सबसे बड़ा तो अपने देश के अंदर ही है. तो अभी सर तो एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा माइक आगे ले लीजिए आपके स्पीकर से. गाइस आर सेइंग माय वॉइस इज गेटिंग रिपीटेड. ओके, अभी ठीक है. कीप द माइक अ लिटिल. गाइस कैन इज इट ऑलराइट नाउ? या आई Is थिंक it इट्स okay? ओके. Okay. So now they're the biggest ones inside India where they have such a huge ecosystem for the last 70 years. It is amazing. I, for one, would say that if AMU has permitted a celebration of such a barbaric attack, UGC should put it on notice that you're going to lose your registration. Khatam. How can you permit such a simple लड़ाई होता, बात अलग है. Such barbarism you're celebrating? Then to AMU should lose its registration straight away. कि भाई साहब, you're no longer a university. Thank you. जो भी कोर्स कर रहा है वहां पे मिड स्ट्रीम जा रहा है, जाए. हिम्मत होनी चाहिए थे इनको रोकने के लिए. अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो यू आर कोलैटरल डैमेज, यू आर एन एबेटर, बिकॉज एबेटर भी आपका ये होता है. थैंक यू वेरी मच. सो अनलेस समथिंग स्ट्रिक्ट इज डन, इनको रोकना मुश्किल है. So let us go through and I'll give a slightly different perspective to the various perspectives that have been coming in. Then is there a shift in the Arab world towards Israel? Yes, there was. And maybe all this, like I said, it was reflexively controlled. They may not have expected such barbarism, but they would have known कि कुछ इस तरह से करेंगे because Hamas has joined up with Islamic Jihad and they call themselves the Islamic Jihad Council of Gaza, Hamas. So now Islamic Jihad is ISIS. Hezbollah is not with them. And we had sounded each other. आज उनका statement भी आ गया है where they have told their government that we will not support Hamas in this battle in any which way. हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने mortar shelling kiya tha, that is nothing. They have just said they don't support Hamas. Now that's the biggest damage that could have been done to Iran. Iran used to be total Hezbollah. Now the moment he has said no to Hamas, I think Iran will lose its hold on Lebanon soon. Next. Firstly, let's क्या हो रहा था. यूक्रेन वॉर फटीग तो आ गया है अब, एंड पब्लिक आयर इन द यूएस एंड वेस्ट वाज आल्सो बिल्डिंग अप अ लॉट बिकॉज दे वर सेइंग इनफ इज इनफ. लाइक आई मेंशन्ड द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर जो इवॉल्व हो रहा है, भारत इज कमिंग अप एज इट्स फलक्रम. जो शिफ्ट हो रहा है जियो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कमिंग टू इंडियन ओशन, which means Bharat. So there is a need for the global deep state, especially the Crown Council and their select people whom they would have selected now, that the threats to this evolving global order need to be neutralized and isolated. And they are the leftists, the no-grations and the Islamists. इनको अब न्यूट्रलाइज करके आइसोलेट करना है बिकॉज दे हैव स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स एवरीवेयर एंड स्पेशली इन भारत. दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, कहां क्या क्या कर रहे थे. नेक्स्ट.
Was it an orchestration of events? Reflexive control. Reflexive control is the meaning I'll explain. रिफ्लेक्सिव कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूं आप कुछ करो, एक रास्ता अपनाओ, मैं नहीं कहूंगा आपको ये रास्ता अपनाओ, मैं इस तरह से इवेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करूंगा कि आप वो रास्ता अपना लेंगे जो मैं चाहता हूं, और मुझे पता है कि ये रास्ता आप अपनाओगे तो उसके बाद इतनी बुरी तरह से पिटोगे, आप उसका जवाब भी नहीं दे सकते, बिकॉज यू विल थिंक इट वॉज योर डिसीजन. It was like a reflexive control. That was the one prime example is the war in Ukraine. Events were orchestrated for Russia to attack. He had no choice but to attack. Okay. हुआ कैसे जो लेफ्टिस्ट का? Since end 2021, gradually जितने लेफ्टिस्ट थे planted in White House staff have all been told Tata bye bye. They're all gone. तड़प इसलिए रहे हैं बाइडेन के साथ because they now don't control they don't know what is going on inside, because कोई भी लेफ्टिस्ट नहीं बचा है अंदर. Despite pressures from all sides, Biden cleared $6 billion of frozen assets for Iran and $350 million for Palestinian Authority, knowing it will be used for Hamas. I'm sure the CIA and everybody knew that this will go there. ये तो स्टेट डिपार्टमेंट वाले देते हैं ना सर. नहीं, बट CIA तो ट्रैक रखता है भाई साहब. हाँ, ऐसे थोड़ी कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. Similarly, some weapons from Ukraine and a few from Afghanistan has been allowed to reach the Hamas. who allowed it, sir? I'm sure the CIA and others knew it, and they looked the other way, because you got to pay. Now, like I mentioned, the first point, the fatigue in Ukraine. So, who is the man who has got to be sorted out in Ukraine for the war to finish? Zelensky. So now when you go in there and you find out these weapons and you say ये weapons आए हैं, जवाबदार कौन? Zelensky. ग्रीन टी शर्ट वाला. बिल्कुल. चैप्टर क्लोज्ड. समझ रहे हो बात? चैप्टर क्लोज्ड, उसका खत्म. ही इज ओवर एज इट इज. अब एज इट इज अगर उसको चाहिए था तो एड तो जा ही नहीं रहा अभी, और अब तो ये सारा एड यहां आ जाएगा. प्रायोरिटी हैज बिकम इजराइल. वो पूरा कैरियर ग्रुप आ गया. इतना कुछ हुआ यूक्रेन का, यूएस ने कोई भी कैरियर ग्रुप, चाहे नॉर्थ सी की तरफ हो चाहे मेडिटेरेनियन में हो, कहीं डिप्लॉय किया ना. यहां हुआ, पहुंच गए हो आप. B-52 बॉम्बर्स हैव लैंडेड इन इजराइल. तो आज रात को तो धमाका दाब के होने वाला है. ये सर B-52 से खुद करेंगे? क्यों नहीं? कौन पूछने वाला है यार? द वे दे हैव एक्टेड एंड पुट इट अप इन सोशल मीडिया, द वर्ल्ड इज सेइंग यार खत्म कर दो इस नासूर को, खत्म कर दो इस नासूर को. इसके ऊपर बैंडेड की जरूरत नहीं है. ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करो, इस नासूर को हटा दो. दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड वंस द B-52 बॉम्बर स्टार्ट ड्रॉपिंग, जिस किसी को चेक करना है, ड्रेसडेन में किया था यूएस एंड यूके बॉम्बर्स ने. जर्मनी में जो सिटी सेंटर और मेन जो सिटी था, लाश तक नहीं मिला था, सारे गल गए थे. That is the impact of the bombing that takes place. फायरस्टॉर्म बन जाता है ना सर. Total firestorm. And it goes inside. ये जो बोल रहे हैं ना टनल बने, ये बने, टनल का आउटलेट नहीं, टनल का आउटलेट इज इनटू द अपार्टमेंट बिल्डिंग. वो सारा फायरस्टॉर्म अंदर जाएगा, निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगा. And they also have the mother of all bombs.
अब तो वो क्या तो क्या लेके आए हैं पता नहीं। 5-10 डाल देंगे, पूरा गाजा खत्म हो जाएगा वो तो। They have turned a blind eye. I refuse to believe that the Five Eyes and CIA did not know it, or even the Mossad did not know it. I refuse to believe. People have been commenting कि सो रहे थे, नहीं है, but yes, 50 साल पहले जब यौम की वो 73 में लड़ाई हुआ था, रिलीजियस हॉलिडे था यौम किपुर का, द गार्ड वाज डाउन. दिस टाइम अगेन, साबत तो छोड़ो, शिमेनी अज़रत इनका रिलीजियस हॉलिडे है, गार्ड वाज डाउन. गार्ड वाज डाउन, पता होगा सर, बट इनको ये नहीं पता होगा ना कब आने वाला है ये अटैक. कब? करेक्ट, गार्ड वाज डाउन. पहले थोड़ी मार सकते हो जाके, हमको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, रोज जाके थोड़ी बॉम्ब मार सकते हो वहां पर. जब करेगा फिर करोगे ना, ठीक है. सो मेरा मानना है कि ऑर्केस्ट्रेट किया था, बट दे डिडंट रियलाइज, लाइक आई शेयर्ड विद यू, व्हिच आई गॉट. बच्चों को केज, जो बच्चे ऑर्फन हो गए, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता को मार दिया, पकड़े गए, स्मॉल किड्स एंड बेबीज, दे पुट देम इन केजेस एंड दे हैव डिस्प्लेड देम. दिस इज द लेवल ऑफ बार्बरिज्म दे आर डूइंग, एंड फोटो निकाल के सोशल मीडिया में डाल रहे, राइट. सो ये तो उसके चार्टर में है ना, इस्लामिक जिहाद काउंसिल में, कि टेररिज्म ऐसे ही करना है लोगों का. इसका एग्जाम्पल तो इराक के अपने कुर्द के इलाके में यजीदी के साथ क्या क्या हुआ था पता है. तो यही है उनकी सोच. तो अब टेरर उनके ऊपर आने वाला है, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी टोल्ड, ऑल मिलिटेंट ग्रुप्स आर गोइंग टू बी टोल्ड कि ये आपके ऊपर आएगा अगर सुधरोगे नहीं. सो आई फील टुडे नाउ हमास is going to be taken as an example of what will come to them if they don't behave. Or Khalistanis will be shitting in their pants after this. अभी तो बाय द वे इनसाइड खबर बताता हूँ, आपने खालिस्तानी का नाम ले लिया तो मेरा मुंह बंद नहीं होता सब. हाँ, एकदम से अंदर की खबर है, 29 तारीख 29 अक्टूबर को एक और रेफरेंडम कर रहे हैं. लेट्स सी कितना चलता है. नेक्स्ट. तो हमास के ब्लंडर्स क्या क्या? सबसे पहली ब्लंडर उन्होंने कर दी जब दे अलाइंड देमसेल्फ विद इस्लामिक जिहाद. हाँ जी. That was the start of their blunder. Next, you attacked civilians. See, I can understand when you are attacking and bombing police stations or military outposts, some civilians are there, collateral damage होता है. आपने वो नहीं किया. You went and attacked civilian places. After you killed them, you were dancing over the dead Israeli bodies, parading some of those bodies naked, parading some captured and tortured women naked, and you uploaded these photos and videos on social media. You signed your death warrant, because no sane Arab or other nations can be supporting such barbarism. तो आपकी जो टू स्टेट थी वो तेल लेने गई. और नितिन बीबी ने एक मैप भी दिखाया था जिसमें देयर इज नो पैलेस्टीन इन मिडिल ईस्ट, देयर इज नो पैलेस्टीन, यूएन में दिखाया था. देयर इज अ रीजन व्हाई people keep talking of two states. Yes, I also say ठीक है, two state होना चाहिए, but the start point of a two state is both states have to recognize each other. While Israel is ready to recognize, Arab world and the Palestinians refuse to recognize Israel. So where, how do you say two states? कौन से दो स्टेट यार? Recognize तो करो कम से कम. Correct. If you don't recognize, then where is the two state? All you say is you're going to destroy, evict, and massacre all the Israelis and throw them into the sea. Right? That is not two state. कोशिश की आपने 48 में, और उसके बाद भी कई दफा पिटते गए हो. Now victimhood. Victimhood on what? When you are not even ready to accept a two state. So I don't buy anyone who comes to tell me कि नहीं two state होना चाहिए. I said ठीक है, two state होना चाहिए. Start with Palestinian Authority and Israel and the complete Arab world recognizing Israel as a state. UN has recognized पासपोर्ट दो ना उनको, पासपोर्ट दो.
पैलेस्टीनियंस को? अब वो पासपोर्ट भी, अब Palestinian authority is not recognized as a state because they don't recognize, nobody recognizes them. Two state आएगा ही नहीं. इजरायली पासपोर्ट में घूमते हैं वो. नहीं, वो तो अंदर वाले जो हैं, बाकी इनके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वगैरह तो आई डोंट नो वेदर दे टेक इजरायली पासपोर्ट. दोज आर दी Arabs, I won't call them Palestinians, Arabs who live within Israel, boundaries of Israel, and they don't even want to associate themselves with the Palestinian Authority or the Gaza. ये हालत है उनका, and they're doing quite well. They and their family and everybody are doing quite well out there, so they don't want to associate them, which tells you volumes. Which tells you volumes कि आपके खुद के लोग जो अंदर हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, and quite a lot of them are in hospitals and engineers and other places. Some of them have already joined and others are joining. They are also ready as reservists. I am sure अभी ये जो इतने सारे रिजर्विस्ट इकट्ठे हुए हैं उसमें कितने काफी सारे अरब्स भी होंगे, इजरायली अरब्स would have joined. Okay. Next, because they are also fighting for their survival. So what could be the likely outcome? I'm saying likely. Destruction of Hamas complete, even more than ISIS. ISIS तो थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, ये नहीं बचने वाला है क्योंकि इलाका इसका छोटा है, घिरा हुआ है सब तरफ से. अभी ऑलरेडी बिजली, पानी, खाना सब तो बंद हो गया, ब्लॉकेड हो गया. इजिप्ट ने भी ब्लॉकेड कर दिया. ऑल द चेक पॉइंट्स आर क्लोज्ड. नाउ विल गाजा बी देयर or not? Will it be split between Egypt and Israel? One or two of the Israeli political experts and analysts based in US, they say that some Egyptian political analysts are claiming that there has been a tacit agreement between Egypt and Israel that except for the southern portion of Gaza, rest everything will be with Israel. So there will be no Gaza. वापिस गाइस जरा बड़ा ध्यान से सुनो. सर ने पूरी एक वो बोलते हैं ना, मेरे को तुम लोग बोलते हो कार्टोग्राफर, आइडिया वहां से आते हैं. ये जरा बड़ा ध्यान से सुनो सर, दोबारा जरा रिपीट करना. There will be no Gaza. वो बात करता है कि भाई southern portion of Gaza will be occupied by Egypt physically, and the balance is going to be occupied physically by Israel. गाजा वैसे भी तो इजिप्शियन है ना सर? But it was left with the Palestinians. हाँ. Or I would say the Palestinian Arabs. Redrawing of the Turkey, maps of the Qatar, Middle East. Iran, Pakistan go into the doghouse. और straight away आपको आ गया है, Hezbollah has read the tea leaves correctly. उसने बोल दिया sorry मैंने कुछ नहीं करना. मैं नहीं कर रहा. ये इस तरह के कर रहे मैं नहीं, because Hezbollah is not part of Islamic Jihad. They don't do this kind of brutality. They have said sorry, I don't support this. सीरिया का क्या होगा? Good question. Very complicated. Syria has come into the Arab world now. I think सुधर जाएगा वो. हो गया ना, is coming into the Arab world. तो टर्की goes off तो नॉर्थ सीरिया का जो बंदे बैठे हुए वो किसिंजर का वही होता है ना. It's bad to be an enemy of US, but it's worse to be its friend or ally. नॉर्थ सीरिया में तो फ्री सीरियन आर्मी वाले तो यूएस के सपोर्टेड थे, अब तो गए ना, वो डॉग हाउस में हो गए. धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. चाइना किधर जाए? हिजबुल्लाह का क्वेश्चन दिया था, उनका स्टेटमेंट आ गया. तो लेबनान में सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा लेबनान, अभी वो सुधर जाएगा. There will likely to be closer relations between balanced Arab nations and Israel. UAE के प्रेसिडेंट ने तो स्टेटमेंट दे दिया एंटी हमास. अलाइनमेंट वाले उछाल रहे हैं. सऊदी ने बोला है नहीं, कहीं कोई अरब न्यूज में नहीं है, इट्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फेक न्यूज.
They have given a balanced statement that they don't support what they have done. Barbarism is bad, but both sides should sit together and talk. Will the outcome be a recognition of Israel by the Arab countries? That needs to be seen. Will there be a Palestine limited only around Ramallah? What happens to West Bank, East Jerusalem? That doesn't go to them. They'll never get it. Ever. We got to remember Jordan, who claims West Bank. The Hashemite people are planted there. They're not originally from Judea or Jordan. वहां रखे हुए थे. They're from Saudi Arabia. हम्म. They were supposed to take over Arabia. But the deal, backdoor deal, the Britishers did with the House of Saud, and that's how Arabia became Saudi Arabia. Otherwise, it was always Lawrence of Arabia. It was not Lawrence of Saudi Arabia, if people remember history. Okay. And since he is considered, even in the Islamic world, the Hashemite clan are considered the direct descendants of Prophet Muhammad. जी. And so they were given the kingdom of Jordan. For what? They don't belong to Jordan. तो क्या होने वाला है अभी पैलेस्टीनियंस के साथ, अथॉरिटी के साथ? पैसे तो पूरे बंद हो गए. गाजा को पैसा तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के थ्रू आता था. So that is now a big question mark. What happens to them? I don't agree to the assessment of people that IMEC is threatened. No. With this, IMEC becomes strong. Because like I said, it is the key for the development of the Arab world, and they will not bite their own nose to spite the face. मैं तो ये भी बोलूंगा सर, I2U2 थोड़ा सा एक आर्म्ड, उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा. अलायंस नहीं होगा, तो है अलायंस नहीं होगा, लेकिन एक आर्म्ड एलिमेंट आएगा उसके अंदर. बिल्कुल. You see, people are looking only at the connectivity grid of Saudi Arabia. I'm sorry. IMEC it is Middle East. Okay, it is not India, Saudi Arabia, Europe. IMEC is India, Middle East, Europe corridor. So how are you limiting yourself only to the railway lines in Saudi Arabia? It is the entire Middle East will get connected. Some people say कि थोड़े ही railway line बचे हैं, वो connect करने. ना जी, complete Middle East will get connected. Yemen has to make a choice now. The North Yemenis, the Houthis. Where will they go now? So it's not the Chinese-led Saudi-Iran deal which is going to sort out this problem. It is this turn of events which is going to sort out the problem. Because otherwise they will be left out. And INSTC goes into cold storage. Totally. बंद तो नहीं सर, वो एक कोल्ड स्टोरेज, वो हाँ वही तो बोलो ना, कोल्ड स्टोरेज में, डीप फ्रीज में, जब चाहिए होगा तब निकालेंगे. एक 6-8 महीने में जब चाहिए होगा जब निकालेंगे. If changes happen within Iran, then it will come out of cold storage. अभी तो कोल्ड स्टोरेज में अंदर रखो उसको. Will all these extreme leftists be put out to pasture? लग तो ऐसी रहा है, दाल गल नहीं रही है इनकी. What happens to the Davos event, annual World Economic Forum, the biggest leftist forum? वो तो गया कूड़ेदाने में. Maybe that will get replaced by G20 events, annual. Financial Track 20, FT20. You never know. G20 का ही part है ना वो. It will may get replaced with that. But World Economic Forum is living on borrowed time now. And the leftists. Because the global deep state has thrown its hats in the ring and said, ये है हमको जो चाहिए.
So now the entire structure is going to work. And what happens to the ecosystem within the Anglo-Saxon grouping? First, it is going to be Trudeau. नहीं नहीं, जसिंडा पहला को विक्टिम जसिंडा नहीं को तो नहीं हटा दिया, हाँ, वो तो हट गई, जेसिंडा उसको तो हटा दिया, जसिंडा तो गई। नेक्स्ट ट्रूडो कब आ? नेक्स्ट ट्रूडो जाएगा, वो बेचारे दे ऑल बी गेट थ्रोन अंडर द बस, जो नोन फेसेस है। एंड बाकी बिल गेट्स और इनका क्या होगा पता नहीं, देखते। ठीक है, नेक्स्ट हमने अपना लेसन्स लेना, प्राइमरली बिकॉज if Bharat is emerging as the fulcrum, leftists and Islamists won't go down without challenging this turn of events. वो तो चैलेंज करेंगे, इनके डिकेड्स का इकोसिस्टम बना हुआ है, लाइक आई मेंशन 70 साल से हमारे अंदर बना हुआ है, हमारे अंदर ही है, लेफ्टिस्ट हैं, इस्लामिस्ट सपोर्टर्स हैं, चाइनीज फिफ्थ कॉलमनिस्ट हैं, सारे अंदर काफी फिशर्स इन्होंने क्रिएट कर रखा है। और ये कैट्सपॉ जो है नॉर्थ वाला, जो लेफ्ट वेस्ट में है हमारे, वो भी सपोर्ट में आएगा टू क्रिएट सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ chaos or some problems within which the leftists could support, because our leftists would want to do this. इलेक्शंस आ रहे हैं ना, आज 5 स्टेट्स के इलेक्शंस बता दिए ना नवंबर में, 2nd December is, I think 2nd December is the counting. So I'm saying everybody, not just the military, everybody has to keep the guard up, be prepared, and you need to support the military and the security forces in their task. If you do that, we can nip it in the bud. And I repeat again, vote wisely in the coming elections. Be careful of whom you elect. क्योंकि ये जो आप फलक्रम बन रहे हो, ये आपका मौका है to start rising and in your own path that you have put for yourself. And by the 100th anniversary of our independence in next 25 years, you will have a lot of standing in the global power structure. अगर ये मौका आपने छोड़ दिया और लेफ्टिस्ट को ले आए, that's it, you go back by 50 years. ये याद रखें, 50 साल आप पीछे चले जाओगे, रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। तो सोच लो, ध्यान से सोचो। और पिछले इसमें मैंने बोला भी था एक चैनल में कि भाई जब हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं, केवल दूसरे पार्टी में नहीं है, तुम्हारे रूलिंग पार्टी के अंदर भी मोल्ड्स हैं लेफ्टिस्ट, उनको भी पहचानो, मदद करो और उनको भी पहचानो ध्यान से। ये मत सोच के रख लेना कि केवल वही है, अंदर नहीं है, अंदर भी है। कई लोग तो सर पता है एक ढोंग बचा रखा है यहाँ पर भारत में। आजकल क्या है ना, मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, बट एक चीज है जो भारत में मैंने देखी है, जिसको थोड़ा सा कुछ एक टेढ़ी बात करनी होती है ना सर, वो पता है क्या कहता है, वो फिर या सनातन पे बात करना शुरू हो जाएगा, हिंदुओं पे बात करना शुरू हो जाएगा, अपने आप को ओवरली हिंदू दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग आजकल वो थोड़ा सा है, एक सॉलिडारिटी है, लोगों को इकट्ठा होना है साथ में, अपनी चीजें, अपना ना जो पुरानी हिस्ट्री है उसको लेके आना है, ये करना है, वो करना है, एक सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है अभी। तो कई लोग तो इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं सर। That is why I'm saying you got to be careful. That's why I said vote wisely. वोट आपके ऊपर है, ध्यान से देखो, खोजो कौन है ये बंदा, क्या है ये बंदा, और अगर कोई भी नहीं पसंद है तो आपको नोटा तो है ही है। किसने रोका है आपको? यही प्रॉब्लम है सर, कई लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू ये वो बात करेंगे, उसके बाद नोटा प्रमोट करते हैं क्वाइटली। वही है, तो यू हैव टू, दैट्स व्हाई आई से वोट वाइजली, लुक एट द पर्सन whom you are voting for.
एंड खास करके असेंबली इलेक्शंस। और सब पार्टी का ना ध्यान से आपको देखना कौन है ये बंदा जिसको आप वोट डाल दो, व्हाट इज हिज एंटीसीडेंट्स, कहां से आता है, आपको क्या बेनिफिट देगा और अपने प्रांत को क्या बेनिफिट देगा, एंड ओवरऑल जो कर रहा है वो देश के लिए क्या फायदा देगा। अगर नहीं देगा, अपने ही खानदान और अपने ही चमचों और लोगों को देने वाला है, तो उसको लाके क्या फायदा। So it's time now for you, the voter, to start voting wisely and making sure that you vote to the correct person. सर दूसरा एक चीज मेरे को आपसे पूछनी है कि देखिए, इंटरनल एनिमी तो हमने देखा वहां पे भी है, इजराइल में भी है, और एक उनको पता है कैसे करना है, वो कर लेंगे। एक अंतर है, जैसे ये हुआ, ऑपोजिशन लीडर वेंट टू बेंजामिन नेतन्याहू, he said अपने थिंग्स खत्म, वी आर गोइंग टू फाइट इट टुगेदर। गलवान हुआ और सबने देखा हमारे ऑपोजिशन लीडर क्या कर रहे थे। That full marks to the Jewish people. The previous prime minister, who is against Benjamin Netanyahu, he's gone as a reservist soldier to fight. Yeah. Naftali Bennett. Yeah, he's gone there. सारे पहुंच गए, सारे ऑपोजिशन लीडर पहुंच गए कि हमको बताओ क्या करना, हम वी आर रेडी, वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर। दैट इज व्हाट इज नेशनलिज्म ऑल अबाउट। नॉट कि भाई कुर्सी मिले, which is why I say need to vote wisely. You cannot have people within trying to make political mileage out of certain things. सर दूसरा एक जैसे I was ashamed कि भाई there is supposed to be they claim that he is a media personality of repute. Moment our prime minister openly supported, he was amongst the first to say that India stands with Israel. She turns around to say he's making political mileage. What nonsense! Are you supporting barbarism? The barbaric act you are supporting? और अपने आप को मीडिया पर्सनालिटी ऑफ रिप्यूट बोलते हैं। Laughable. Really laughable. And this is where you find all the termites coming out of the woodwork. कौन कौन है ये लोग? From their tweets and other things you can make out कौन है ये लोग, what stance do they take. वर्स्ट है सर, एक और चीज बताऊं, ये इससे एक और चीज एक्सपोज हो रही है, जो वेस्ट में बड़े प्रो रशिया एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं इनके, ये हैं वो हैं, सब कुछ है। आपको बताऊं सर, दीज आर ऑल चाइना पेड, क्योंकि जहां चाइना के बारे में बात होती है, वो चाइना इज द नेक्स्ट, चाइना विल डिसाइड, अरे भाई, बीइंग प्रो रशिया डज नॉट मीन बीइंग प्रो चाइना। कई लोग तो इतने गुमराह हो रखे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि भाई आप जो बोल रहे हो उसमें किसका फायदा होगा। I was reading a paper from one of our own economists, and एक Paul Scheer something ऐसी को leading economists of the 70s, 60s, 70s and 80s in the West, and he had written that the Soviet Union will go ahead of the US economy by 2050. By mid-90s, just before Gorbachev took over, he brought it forward and said the Soviet Union will go across the US economy by 2020. Soviet Union है? नहीं है। यही लोग हैं जो कह रहे हैं चाइना विल एक्सीड देम बाय दिस डेट, एंड
what I found interesting was what this person had written, something sensible, that you cannot predict economic development through mathematical modeling, which is true. Economic development is human centric. What decisions you make, how it is implemented, how do people work with it, you can never predict those. बंदे कैसे होते, that is where he said people go wrong. अब इनको पैसे मिले हुए हैं तो ये ब्लाइंडली चाइना 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 बोलते जाएंगे कि चाइना इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो पैसे मिलता है। अरे सर चाइना ब्रिक्स, मतलब समझ नहीं आता यार क्या बोल रहे हो तुम। आई मीन इफ यू वांट अगर आप ब्रिक्स की बैटिंग कर रहे हो तो फिर आप अब क्या बोले आगे। His master's voice, HMV. अरे सर XMV होना चाहिए, शी मास्टर्स वॉइस। तो his master is she, तो his master's voice, जो मास्टर बोल रहा है वो रिकॉर्ड प्ले कर रहा है, बोली जा रहा है सर। आखिरी में बिफोर वी गेट इनटू, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं आज तो, मतलब लोगों के पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे पास 2800 2850 लोग बैठे हैं सर इस टाइम पे। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप देख लीजिए, लोग सुनने को उतावले हो रहे हैं अभी थोड़ा। नाउ सर एक जो चीज मुझे पूछनी है आपसे लास्ट में इज अबाउट जो ये ग्लोबल ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, हम लोग एक देखो गाइज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक ही चैनल है यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग काफी टाइम से। इट्स नॉट नाउ, हम लोग तो सर एंड मेरे मतलब ऑफलाइन कितने डिस्कशंस होते हैं उनको हम ऑनलाइन लेके आते हैं। एंड ग्लोबल ऑर्डर जो निकलेगा, see the point that I'm trying to come to is that what is एक जो स्ट्रक्चर हमने, एंड जयशंकर जी ने इसके बाद, चलिए मैं थोड़ा सा टेक अ मिनट इफ यू डोंट माइंड। जयशंकर जी ने एक चीज बोली कि यूएस को, और ये बोला था हडसन में, उन्होंने हडसन नहीं सीएफआर में बोला था। उन्होंने बोला कि साहब यूएस को ये चीज समझ में आ गई है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है, और यूएस की फोर्थ थॉट में आप थोड़ा सा ध्यान करो कि वो बोल रहे हैं कि साहब अपने आप पावर सेंटर्स, आई विल हेल्प यू, आप बना लो एंड यू फिगर आउट, आई विल जो भी मेरे को करना है आपके साथ करूंगा एंड यू फिगर दिस आउट। इसमें अब मिडिल ईस्ट का बात करते हैं सर। मिडिल ईस्ट में आई थिंक यू एंड आई बोथ अंडरस्टैंड कि पावर सेंटर तो है आपका सऊदी अरेबिया जी। इजराइल का क्या रोल दिखता है आपको गोइंग फॉरवर्ड सर? बिकॉज इजराइल अगर ये चीज ढंग से कर पाएगा, he will become, I mean, it will be Saudi, it will be Israel, दो कंट्रीज पूरा रीजन देखेंगी ये। it is the technological development to diversify their economy. India has technology, so that's why they are looking at India. They have worked in India, they have worked in Israel. These are the two countries on either sides of the Middle East who will contribute towards the development and diversification of the economy for their sustenance. ये यूएई समझ गया है, सऊदी अरेबिया भी समझ रहा है, और बाकी देश भी, इजिप्ट तो समझा हुआ है कि इनके बगैर टेक्नोलॉजी वगैरह आएगा. व्हाई डू यू थिंक ही इज डूइंग डील्स विद यू? Look, at the end of the day, that is why I was saying that the Islamists will now be pushed back, because at the end of the day, the people are more interested in having a good life, a better life than what they are living. They need economic security, food security, कि यार हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आराम से अपना काम करेंगे, रहेंगे. Which the Islamists are disrupting. They are the disruptors today. The leftists and the Islamists are the disruptors today. Okay. It suits China. So China supports these disruptors. But now I think he has got into a quagmire. He realizes that he backed the wrong horse. Right? And so
this realization has now come that it is IMEC which is going to provide the development. चाइना क्या देगा? चाइना ने आज तक किसी को दिया ही नहीं है, तो दूसरों को क्यों देगा? वो श्रीलंका को नहीं दे रहा दोबारा और पैसे. Yes. तो it is they know that India ये करेंगे, and whatever little bit जो gap fill करना है वो US देगा. And they have to diversify fast because the coming decades are going to be very difficult for them once the greening takes place. And I am not saying that fossil fuel ka requirement will go, but the requirement will reduce. बहुत जबरदस्त. Then what do you do? अभी जैसे हम ethanol mix करके करने वाले हैं. Once you start mixing ethanol and start using that fuel, your requirement of fuel will go down. Yeah, fossil fuel will go down. Once that happens, then what do you do? Globally, if that starts happening, what do you do? That is the reason why I think last decade the Saudis had started this concept of NEOM, that 160 kilometer long और उनका वो fanciful है. They want that to be the nerve center for diversified economy. And it is right at the mouth, at the outlet of the Suez Canal. Top left corner of the Saudi coastline of Red Sea. वहां पे बनाना चाहता है. So there are a lot of things they want to do. So which is where I was saying that this push now towards Arab reconciliation, if it comes through and the recognition and काम शुरू हो जाता है, it will change the not just the dynamics of the Middle East, it will change everything. And that is what is the new global order which is coming in. You will be here in South Asia, Southeast Asia, Indian Ocean region में. In West Pacific देखते हैं कौन निकल के उभर के आता है. Does Japan come up, or Japan and South Korea come up? And then they will have a grouping Australia, New Zealand and South Pacific Islands. So that way, वो उस तरह से, these will become these hubs. Like I said, in this region, India becomes the main, your supply chain hub, the maintenance, repair and overhaul ka MRO hub. You become the manufacturing hub. It is a hub for this region. You will also be, you will also have an outreach into West Asia and into eastern coast of Africa. उस तरह से ये hubs निकलेंगे आपको. Already the hub is coming up. Vietnam, Philippines, Thailand, the hub is coming up that place where they're pulling out from China and going there. लोग ये सोचते हैं कि नहीं, चाइना से निकल के आएगा तो पूरा इंडिया में आएगा. आएगा नहीं यार, हम शुरू से बोल रहे हैं नहीं आएगा. This is because the biggest lesson from COVID was that you cannot have one center for everything. Because if that is the one center, वहां पे कोई problem हो गया तो the whole global economy goes for a toss. So you will have multiple centers, but you will be one of the biggest centers, the key centers in this region. Key centers, I would say. Yeah, that's why I said fulcrum. In this region, you are the fulcrum. Let's get into some questions, sir. बहुत सारे questions हैं. I have lots of them, so we'll kind of run through them so that I get more and more people, involved in this. Yes. And सबसे पहले, guys, likes. अभी आता है audit time. सब लोग मेरे को audit करते हैं और मैं आप लोगों को audit करूंगा. ठीक है, तो ऑडिट टाइम में देखते हैं जी आप लोग पास हुए कि फेल हुए, जरा ये देखना पड़ेगा. हैं लाइक्स कितने, लाइक्स और शाइक्स एग्जैक्टली राहुल 956 यार. 3000 बंदे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 2900 बंदे बैठे हैं. कम से कम थोड़ा तो और कर ही सकते हैं. बट गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली थैंक यू सो मच. अभी तक आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं. 79,000 हम लोग आ चुके हैं. इट इज सच अ नाइस फीलिंग. 1 लाख में पार्टी लूंगा तेरे से. I'll come to Mysore. हाँ, प्लीज सर, एनी टाइम.
तो 1 लाख पे तो आई वाज प्लानिंग टू डू एन इंटरैक्टिव सेशन वेयर वील गेट हमारे रेगुलर्स आल्सो ऑन द शो या बिल्कुल एंड बिल्कुल टॉक टू बिल्कुल। एवरीबॉडी जस्ट अबाउट नॉट जियो पॉलिटिक्स बट द पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ। तो वो करने की एक प्लान है मेरा। बट इन एनी केस गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मेरे को, इट्स रियली हार्टनिंग। प्लीज स्प्रेड द वर्ड इवन फर्दर, सबको बताइए आप। मेरे से रोज रोज सो मेनी न्यू पीपल राइट मेल्स टू मी, लव इट। Please write as many as possible. मेरा email address is down below. All the regular people that I hear, you know, please, write to me. अब वो नॉन रेगुलर वाले भी मेल लिखते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ नॉन रेगुलर वाले, तो वो भी चलता है, डजंट मैटर। आई एंजॉय रीडिंग दोज आल्सो बिकॉज इट टेल्स मी दैट कहीं ना कहीं जब नॉन रेगुलर दुखती रग बंदा पे मेरे को मेल हाथ लिखता रख है कि दिया, कहीं पे, हाँ, कहीं चुभा है कुछ ना कुछ। दुखती रग पे तो ठीक है, हाथ कोई रख बात नहीं, दिया। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। और जब से मैंने स्पेशली खालिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू करी है तो लोग बहुत गुस्सा है मुझसे, काफी सारे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब हियर एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टुवर्ड्स मी। मेरा क्यूआर कोड इज अप देयर, या फिर आप मेंबर्स बन सकते हैं, या सुपर स्टिकर्स या सुपर चैट्स भेज सकते हैं। आइए चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं यार। लेट्स सी व्हाट यू गाइस हैव टू से। Let's start first with PS Saab. Thank you so much for your Wow. super sticker. And let's go JBJP. He says AMU created PAK, lack skilled, Bangladesh political will, ban political will. अब एएमयू में ये हुआ है तो एफआईआर लाइक आई सेड दर्ज होने लगा है। आई वुड लाइक टू गो अ स्टेप फर्दर, either sack the management and the vice chancellor, that how did you permit this support for a barbaric act coming? That is number one. You can't celebrate such barbaric acts. And let's see, इस गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल दिखाया है ये करने के लिए है क्या? Because I, like I said, I would like it to go to the next step and just यूजीसी को बोलो रजिस्ट्रेशन आपका गया, you have lost your recognition, you are no दूसरा longer ऐसे a मैंने ये भी UGC. देखा है, ये लोग ना खेलते हैं इन लोगों से, ठीक है। एंड दिस इज माय थ्योरी, दीज हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है ना, दे लाइक टू प्ले विद दीज पीपल। इनको भी फिर वो नहीं, अभी तो अंडों की तरह एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गए हैं। दैट वाज द लास्ट आई हर्ड, सर इनको एफआईआर तंग दर्ज करते हैं, होने मैंने देखा है आर लगा। गए वीडियो ये जो नहीं, पागल है ना, वीडियो अपलोड करते हैं। नहीं, करते हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, तुमने तो सब दिखा दिया, शक्ल दिखा के, वो शक्ल के साथ नाम आ गए और अब एफआईआर लग रहे हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन एक चीज है सर, ये जो मैं ये बोल रहा हूँ, कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। देखो यार, एक चीज है, जब वो एक्शन ना नहीं लेते हो ना, तो लोगों की थोड़ी सी जुद थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी अंदर की ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और वो जब स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, फिर गलतियां करते हैं तो खुद फंसते हैं। तो व्हाई पुट योर हैंड इनटू, it's like walking on the 40-foot wide road and there's a small pile of shit lying in the middle and you go smack dab it straight into it. ना don't do that. बहुत चौड़ी सड़क है यार, साइड से निकल जाओ। एंड जो चीज टेढ़े मेढ़े होंगे वो अपने आप उभरते हैं। एंड हर चीज का एक टाइम होता है, मेरे हिसाब से ये है सर। ऑफ टाइम कोई भी चीज सेट नहीं बैठेगी। There has to be a time and a reason and then you can do it. अभी इजरायलीज के पास टाइम है ना, अभी ठोकेंगे ये अब लोग। वो अपने टाइम से ठोकेंगे, ऑलरेडी शुरू हो गया। That's the उनके key बैंक, point. द मेन बैंक इन विच ऑल देयर मनी वाज इज गॉन। सो द बैंक, क्या पैसे भी गए, जो अंदर लॉकर शॉकर जितने सब थे, उनका वॉल्ट था, इट्स ऑल गॉन। देयर जी हेडक्वार्टर्स इज गॉन, देयर इंट base is gone, the communication is gone. There are about 1200 Hamas targets that have been destroyed. And there, of course, like I said, there is no bijli, there's pani has been shut, and there's no food going in, nothing going in. Blockade ho chuka hai. The carrier group is also there for the blockade. उस carrier group को तोड़ के किसकी हिम्मत होगी ब्लॉकेड तोड़ के आने के लिए, देने के लिए? किसी की नहीं। खत्म, भूखे मरोगे। अगर ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है तो करो, तुम ही भूखे मरोगे। चॉइस इज योर्स। Nabas Parsham, thank you so much for becoming a member. Gumnami Babaji, thank you so much for becoming a member. Vineet, why He said, will BJP? Bharatiya social media influence this war? Why should you get into it? You look at your inside, bhai sahab.
दैट इज द लेसन आई वांट। वो तो लड़ लेंगे, यूएस वेस्ट सब उसके साथ है, वो तो लड़ लेंगे। हमें अपनी लड़ाई अंदर की लड़नी है कि ये इस तरह की चीजें हमारे अंदर शुरू ना कर दे। यू गॉट टू बी केयरफुल ऑफ दैट। I think we've answered this question, Vineet ji. Center spot, thank you so much. Balochistan and Sindh to India for India-Iran war. Why would you व्हाई डू fight वांट Iran? बलूचिस्तान सिंध? इतनी जल्दी भी क्या लगी है यार? अभी तो जीना है बरसों तुम लोगों को, आराम से आएगा अपने पास, जब आना है जब आएगा। जल्दबाजी किसकी? Timing. It's all about the timing. Patriot, thank you so much. He says, Rajiv sir, ऐसा लगता है कि 24 घंटे से आपको सुनता रहूं. थैंक यू सर, थैंक यू। JBJP, जनरल सर, अन्यानिधि का क्या उदयनिधि करने की का क्या जरूरत नहीं है गया है यार, बीजेपी? अब छोड़ो तो यार, तड़प गया है वो, अब तो बच्चे तड़प हैं गया कि यार. वोट नहीं मिलेंगी वो। That's what I'm saying. Please understand. थोड़ा सा रोप दो ना लोगों को, फिर वो अपने आप गलतियां करते हैं. Then you catch them. Don't off time go. वो This is चलेगा where नहीं, I keep बैठेगा नहीं. saying, vote wisely. Now when he comes for elections next time, don't vote for him. Khatam, lesson learned. Rahul ji, thank you so much. Will USA try to settle Ukraine and Russia now? बिल्कुल That'll बिल्कुल be बिल्कुल बिल्कुल। वो क्रीमिया हो गया, वो चारों वो सारे हो गए, सब हो गया, दैट इज डन एंड डस्टेड। सो अब पोलैंड माइट आस्क फॉर द पाउंड ऑफ फ्लैश। गैलिशिया एंड एक और प्रोविंस है उनका जो पुराना लिविव एंड ऑल दिस एरिया यूज्ड टू बी Poland, विद Romania, Hungary, all of them are वो ले waiting. लेगा। तो अब क्या बचता है यूक्रेन का? बट लाइक आई सेड, by these leaks that have come out of the Ukrainian weapons being there and have been used, like one top attack ATGM has been used to destroy the Markava. तो वो सब अभी निकल के आएंगे एंड ज़ेलेंस्की भाई अभी भागने की देख रहा होगा कि मैं कहाँ भागूं। विला है सर, कहीं भी जाके बैठ जाएगा. Indic Gal, thank you so much. Adi, your voice needs to reach a much larger audience. Thank you so much. The channel's voice, not my voice. Yes, channel's The voice. channel's voice. Mohan ji, thank you so much. He says, ask General Sir, how do you see the role of Russia in this conflict? Russia has given you a balanced response there. वो उलझने वाला नहीं है इसमें, but he also knows he is, Lavrov ने has made a snide remark on them. They supported Ukraine. And now they've said कि यूक्रेन वेपन्स आ गए हैं वहां पे। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही बोला है कि यूक्रेन के वेपन्स आ गए। सो लावरोव ने ओपनली बोला, दिस इज व्हाट यू गेट बाय सपोर्टिंग नाज़ीज। बट दे आर विद यूक्रेन, दे आर विद इजराइल, दे आर नॉट विद हमास। नहीं, they have very deep relations. Tech transfer happens. इनका बहुत tech transfer है इजरायलीज के साथ. वो मुंह पे जो मर्जी बोलते रहे, ट्रस्ट यू मी, रशियंस एंड इजरायलीज आर ऐसे हैं वो. क्योंकि रिमेंबर, आप अपना ये वैक्स देख लो ना, जहाज आया था रशियंस के साइड से, उज्बेकिस्तान में उनका फैक्ट्री है। सारे एवियोनिक, सारे सेंसर्स कहाँ से आए थे? इजराइल से आए थे। बहुत टेक ट्रांसफर है इनकी, चुपचाप करते रहते हैं, वो किसी से बोलते नहीं है. दूसरी चीज याद रखिएगा, रशिया में बहुत जूइश पॉपुलेशन है. Yes, and a lot of Russian Jewish population are also there in Israel. Yeah. Sylvia, thank you so much. He says Indians, you mentioned this before as well. If you don't want them the same to happen to you, you have to start today. Broad brush ये मत करो. Like I said, economic boycott you are saying, Sylvia ji, with Muslims. No. I would say economic boycott of Islams. All Muslims are not Islams. Like I said, I am okay with the Bharatiya. As long as you are doing loads it for of the benefit Bharatiyas. of people. Yeah. And there are quite a lot of Bharatiyas out there. Bharatiya जब बोलता हूँ मैं, I am not looking at किस जाति के हो, किस प्रजाति के हो, किस धर्म के हो, किस कहाँ से हो। आप भारतीय हो, भारत में मानते हो, भारत के बेनिफिट के लिए करते हो, I am okay with you. The moment you start talking of Ummah, then you are an Islamist. Then I am not with you. उनको अगर आपने बहिष्कार करना है, given their lives, परमवीर चक्र होल्डर्स हैं सर, हमारे देश के लिए जाने दिए लोगों ने in the worst of conditions. यार ट्रू भारतीयस यार, your own president. Absolutely, salute to them. Rocket man, missile man. So I won't say
broad brush all Muslims. No, No. I don't. Venkat Tata, thank you so much for joining in. Venki Sahab says, General Rajesh, a brilliant session. My question, will this carnage mark the beginning of the end Yeah. for the Islamic tyranny? अभी Islamists डरने लगे. Because my fear is it's going to be a repeat of Dresden on Gaza. Because a lot of experts were saying they built up area hai, it becomes difficult. Why does he want those built up areas? Doesn't want them. तोड़ देगा पूरा वो. If it stays in shambles, it stays in shambles. Does Sir, it but जिस तरह से bombing कर contribute रहा है ना ये, anything? Does it contribute anything for the betterment of Israel? No. अपने टाइम से वो डोज करके साफ सूफ कर पुरा के बाद में फिर बनाना शुरू कर देगा जो कुछ बनाना. My fear is now that the B-52 bombers खास करके जब आ गए हैं अभी, no, it's going to be a repeat of Dresden. I won't लंबा चले जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग ड्रेसडन बॉम्बिंग करके पढ़िए. आई थिंक 44 में हुआ था. 44 यूके onwards, एंड हाँ. यूएस ने मिल के किया था. ड्रेसडन बॉम्बिंग करके आप पढ़ लो. उसका वीडियो भी है यूट्यूब में, उसका वीडियो भी है, शॉर्ट्स भी हैं, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बंदे पिघल गए थे पानी. टोक्यो में क्या हुआ था? हीट फायर स्टॉर्म टोक्यो इनसाइड द मेट्रो स्टेशन एंड अदर थिंग. नहीं, वो तो न्यूक्लियर था ना, ये तो नॉर्मल आपके बॉम्ब थे. नहीं sir, fire bombing of Tokyo also happened ना, या दिस when they almost hit the palace. एंड इसमें मतलब पीपल हैड गॉन इनटू द मेट्रो स्टेशन. कुछ नहीं मिला वहां यार. द होल सिटी वाज इन विद द फायर स्टॉर्म. Vaporized. It was pulverized. वही होने वाला है अभी इनका. That was अगर part ये of हो those. गया, अब पता नहीं करते हैं कि नहीं, ये मेरा अंदाजा है. अगर ये हो गया, then everybody will be shitting in their pants कि भाई साहब ये हमारे साथ भी हो सकता है. So all these rogue nations थोड़ा चुप हो जाएंगे. Indy Gal, thank you so much. Hezbollah Yeah. leader Sherry दो killed in तीन लीडर Israeli मार airstrike. चुके हैं. Their main leader was killed on the first night itself. Yeah, second in command. But वो तो marked ही आते हैं sir. वो तो पता है. First and second कौन is कहाँ है? First strike expendable. they've taken already. Ananya Bhatt, thank you so much. Kindly expose leftists on the specific defense channel, which claims to be the only intellectual defense channel in India, claims to be non-political but bats for the left in every video. I don't know which Ananya channel you're बता talking दो about, हमको. but Ananya, could you please tell me which one you're talking about? आप उनको भेज दो उनके लिंक पे. कौन है ये? Vallabh, thank you so much for becoming a member. Dr. Tripathi, thank you so much for your super sticker. Umnami Baba, thank you so much. Dresden was a beautiful city, old world paradise. Yes, Yeah, it was finished. yes. That's why the head of the British Air Force never made it beyond the Air Commodore's rank. That was Anmol the gift Sharma, of books for someone new to defense and geopolitics. अरे यार बहुत सारे हैं. अगर जियोपॉलिटिक्स पढ़ना है ना, तो सबसे पहले पढ़ो मैकिंडर्स हार्टलैंड थ्योरी, और उसके बाद पढ़ो महान सी वॉरफेयर, अल्फ्रेड थेयर महान. ये दोनों समझ लो, फिर आपको जियोपॉलिटिक्स समझ आ जाए. जो कहता नहीं मैकिंडर नहीं हो रहा, महान नहीं हो रहा, आई एम सॉरी, इट इज हैपनिंग इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ Various forms. ये समझ गए. उसके बाद रीड अर्थशास्त्र एंड सुनजु's आर्ट ऑफ वॉर, एंड देन आफ्टर दैट गो फॉर मैकियावेली's 2 books. मैकियावेली का द प्रिंस है, बट द मेन बुक आई वुड से इज डिस्कोर्सेस. Where he talks of democracy, republic, dictators. So these give you a general idea of how the world was working and will work. And then uske baad, then there are a lot of writers and books and other things
present day writers. But if you're reading, if you want to be into geopolitics, you got to know your history. हर एक रीजन का हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री because everything is linked to history and geopolitics. What is the role of Qatar in this? I think we've discussed it. It's the पैसा silent वाला backer. खत्म हो गया. Iron Dome costs up to 10 much to stop 10,000 rockets in 2 hours, but DRDO use S-400 to stop similar rocket attack from Pakistan. Site in the next 2 to 4 years. Is it an open secret? ISI Bikaristan will modernize this for करे the हुए US. यार अभी भी. डेरा गाजी खान का देख लेते हैं क्या हुआ. अगर शाहीन 3 वहां जाके गिर गया तो डर लगा होगा ना कि साले मिसाइल में क्या फायर करूं, किधर फायर करूं. लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो, दिल्ली की तरफ फायर कर रहे हो, पता लगा इस्लामाबाद में जाके गिर गया, क्या करोगे. दैट इज वन. आई सी पीपल थिंक कि भाई एक आयरन डोम लग गया या S-400 लग गया तो हो गया. ऐसा नहीं होता. This time, that is why they went through the Iron Dome, because they flooded it with so many missiles. So the system is geared for X number of missiles, and if I send 2X, X तो destroy हो जाएगा, but the balance X जो है 2X का X वो निकल जाएगा. So that is how you do. But does Pakistan have so many missiles जो आपके S-400 के थ्रू चला जाएगा? And by the way, S-400 का वो डिलीवरी हो गया. जो लोग कह रहे थे कि नहीं होगा वो आ गया. Russia has given you the S-400. What? Chris, thank you so much. Recently, Russian hackers hacked the Israel government website. What will be our stance with Russia's, as they have Chechenians who are hardcore Islamists, but they are Russians. They are Russians. Hardcore Islamists थे, उनको भाई साहब सेकेंड चेचन वॉर में सॉर्ट आउट कर दिया. फर्स्ट चेचन वॉर was a failure. The second one, they used the fuel air explosives, the mother of all bombs and all that, in all their weapons they have. And they had fine-tuned it in Afghanistan. So they used to call it the Satan stick. छोटा फायर फ्लेम थ्रोअर होता था, उसमें से ये आता था फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव, थर्मोबारिक बॉम्ब. सॉर्ट आउट हो गए पूरे. अब दे आर हार्डकोर, लाइक आदि से दे आर हार्डकोर रशियंस. हैकर्स तो बहुत हैं. दे माइट हैक इनटू गवर्नमेंट वेबसाइट. आर यू श्योर इट वाज द रशियंस? That's what is the claim. The moment he came and openly states that I am a Russian thing, thank you very much. Hackers don't come and proudly say that I'm sure. The claim is that there's an Indian group which is hacked over the Hamas website. So, हैक जो करता है ना, चुपचाप से करके चला जाता है जी. ओपनली बोलता नहीं है. जब ओपनली बोल रहा है इस सिनेरियो में, when Russia has given a balanced statement, I have a big question mark if it was a Russian hacker, Russian group which hacked. I won't be surprised if it was a Chinese group which hacked and said it was Russian. Chirag ji, thank you so much for your contribution. Narayanan Rao ji, thank you so much for your contribution. Gumnami Baba, once again, thank you so much. Your thoughts in Bharat's alternative for S-400? Damn What good. do you want an alternative? Yeah, S-400. हम लोग बना रहे हैं ना सर अपना वर्जन. We are making our own. वो तो अभी टाइम लगेगा. तो see, air defense weapon is a grid. At various distances, it is a grid. S-400 by itself gives you the capability. It depends on what all missiles we have taken. I won't know. I'm not in the loop now. Recommendation में हमने तो सबने recommend किया था all these systems that they are providing. So this is one system which gives you a coverage from over 400 meters to 60 kilometers. 400 kilometers to 60 kilometers. Aircraft flying objects in all vectors, low flying cruise missile, हाई फ्लाइंग, मीडियम फ्लाइंग, जो ऑल्टीट्यूड है पूरा कवर करता है. वो सारे वेक्टर्स को देखता है उसका रडार.
So you have a set of radars which look at all the vectors. Unlike the existing systems where you need multiple systems to do this task, this is one system, and the next one which they are now, I would say, fine tuning in Ukraine is S500, which goes to almost 5 to 600 range. जो टारगेट एक्विजिशन है goes almost about to 600-700. तो टारगेट एक्विजिशन 600-700 की कैपेबिलिटी तो हमारे पास भी है, तो इसको देख के लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. Otherwise we have very good systems. Akash and other systems are there. They're very good systems. Tripathi ji, thank you so much for your contribution. Aadi, Lockheed Martin stock up by 7%. Other defense stock in the US up from 2 to 5%. Obviously, demand आ गया ना, सारा कुछ जाएगा बनने के लिए. They have openly said they have X capability for making the missiles of the Iron Dome. बाकी US से आने वाला. Anikesh says this is undoubtedly the start of a hybrid sort of world war. There's no way of de-escalation in sight. There will be no de-escalation till Hamas is finished. हमास ने तो पूरे पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी वाले सब बंदों को खत्म कर दिया था, वहां पे चुन चुन के मारा था. एंड देन दे फाइनली टुक कंट्रोल ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आल्सो. जब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे वो बाकी वहां पे आप ही आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे. The biggest blunder, like I said, the number one blunder they did was joining with the Islamic Jihad. That cooked their goose. आज जनरल साहब थोड़ा प्रकाश डालें कि अमेरिका का रोल क्या है हमास के क्रिएशन में. नहीं, अमेरिका ने हमास को क्रिएट नहीं किया था. अमेरिका तो यासर अराफात और वो सबको सपोर्ट करता था, पीएलओ. The Israelis had created a small Israelis ने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था पीएलओ के पीछे जाने के लिए, which converted to the Hamas later on. वो तो बाद में आया था, मिड 80s बाद में. And then they became too big for their boots, and then अब ये हो गया. General Sir Aadi, namaskar. I will see the recording. However, if you can take my question, will Jordan join the Hamas alliance with Turkey? Turkey's role for the future trade? No way. Jordan is not going to be. Jordan has very good relations with Israel. No way. And in any case, that route is gone. Turkey का route के through तो is gone because Iran is gone. अब तो ईरान चीख चीख के बोल रहा नहीं, मैंने हमास को हेल्प नहीं किया. सारे तो लेफ्ट पॉइंटर्स आ चुके हैं. So now that route, चाइना इसीलिए रो रहा है ना, उसके ऊपर के जो दो नदर्न रूट्स थे यूरोप जाने के लिए वो बंद हो गए. एक रूट बचा था टर्की के थ्रू, अब थैंक यू हो गया ईरान और टर्की का विद दिस वॉर, तो अब तो वो थैंक यू हो गया. बाकी कोई चल ही नहीं रहा उसका. सीपेक इज डेड डक. नेपाल इकोनॉमिक ट्रांस हिमालयन नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर इज डेड डक. द साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर इज डेड डक. उसका सी रूट तो थैंक यू हो गया है, सब डेट क्राइसिस में हो चुके हैं. उसका बीआरआई तो ठप हो रखा है यार, मेकिंग नो प्रोग्रेस. So, Sai Kiran, what do you think about the pro-Israeli chants in Iranian football matches? Yeah, that was funny. वो तो भड़ास निकल रहे हैं ना, जिस तरह से रिलीजियस पुलिस को लेके वो सबको डंडा मार रहे हैं, तो भड़ास निकाल रहे हैं लोग कि भाई तेरे को चुभता है कि मेरे को इजरायली चैंट करते हैं तो हम इजरायली चैंट करेंगे. दैट्स द होल थिंग. समवेयर द प्रेशर हैज टू गिव. आफ्टर ऑल, एक तो वो लड़की मरी थी, वो क्या नाम था उसका, दैट पुअर गर्ल वाज बीटन अप एंड शी डाइड, and there were riots and all this which took place. There is another girl who has been beaten up in a metro station and she is in coma. कि हिजाब थोड़ा सरक गया था तो आप ठीक से नहीं पहने तो मार दिया उसको. शी इज इन कोमा. समवेयर उसमें तो निकल गया था सारा प्रेशर आउटलेट. तो नाउ दीज आर द प्रेशर आउटलेट्स. प्रो इजरायली चैंट चीख देंगे. और जब क्राउड में हो क्या पता लगता किसने बोला. तुमने बोला नहीं, मेरे को नहीं पता किसने बोला. क्या बोले. We cannot continue with political correctness anymore. Look at the reactions inside Bharat. One has to be a fool to think that they don't intend to do worse here. So are we prepared?
Yeah, firstly, political connections, भाई तेल लेने. That's why you find our Prime Minister was the first one who said, I stand. And I think immediately after that, Aadi ने भेजा था, and I have also tweeted and सारे social media में डाल दिया, I stand with Israel. And I have got responses from Israel also, thank you. Yeah, same here. And you know all these people now, आज वो सारे खड़े होके बोल रहे हैं टू स्टेट, ये स्टेट हो. तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, टू स्टेट तो तब होगा जब दोनों स्टेट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं. एक रिकॉग्नाइज करता है, दूसरा तो कहता है कि मैं तो तुमको फाड़ के जला के खत्म कर दूंगा. तो व्हाट टू स्टेट थियरी आर यू टॉकिंग अबाउट यार? गुर्दे में दम है तो बोलो अरब नेशन को कि सारे तुम सब उसको दबो यहाँ से. रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद हम बोलेंगे टू स्टेट. 70 साल तो गुर्दे में दम था ही नहीं, तो अब कौन सा गुर्दे में दम आएगा इनके? So yes, we are prepared. So you got to be cautious also. You are prepared and you got to stay prepared that they don't do this sort of a thing. जी. And खास करके क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं एक के बाद एक. Rahul ji, thank you so much, sir. Can we say Sanatan Dharma is slowly being formed all over the world the way it's being formed in Bharat? Rahul ji, I know so many people around the world who have become Sanatan Dharmis, that it gives them peace of mind. कुंभ मेला जाके देखने की बात है, कुछ भी नहीं तो वीडियो देख लेना, and you'll be amazed at the number of foreigners. I'm not talking of foreign photographers and press reporters who come. No. Foreigners who come with bhakti. That is indicative. Yes, sir. Arin, thank you so much. People of InfoSec don't talk, just do. Jai Hind. Yeah, bilkul. Really correct. Jayesh Mishra ji, thank you so much for becoming a member. And breaking news, Sharda ji says 2 United States Air Force planes carrying military equipment landed in अभी तो और Tel भी Aviv. आएंगे, but I told you ना शारदा जी, B-52 bombers have come for launching raids. तो डर लग गया होगा अभी तो. No wonder Iran is saying नहीं 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 मैंने नहीं किया. डर लग गया. Sanil says, do all the Five Eyes. So all the Five Eyes are busy finding a way to implicate India, and they missed Israel You completely. missed the thrust which I was giving. Reflexive control. Just read the meaning of reflexive control. About Turkey's role in the supply of 10 tons of rocket raw materials to Hamas some time ago. It was intercepted, but some amount still reached Israel. Yeah, but raw material तो छोटे रेंज रॉकेट है, not these such long range rockets. Long range rockets तो broken down mode में दिया होगा to fix it up. War was instigated by Russia, so the pressure drops off Ukraine and puts a closure to the Ukraine war. Palestinians are the collaterals in this process. हाँ ऐसा है भाई. I won't say, that's not my view. This is the global deep state crown council pulling strings that the old order has to go and the new order has to come. And these were the people who were part of the old order. Yeah. That's how it works. In the late 70s. If they had not done, I will just add one thing. If they had not done this barbaric act, it would have stayed as a war, and you would not have had this. Israel would not have had this kind of global support that it has today. The kind of barbarism that was done, which they are still doing, and putting it on social media. Yeah. I mean, just imagine small kids, babies, 2, 3-year-old, 4-year-old, बैठे देख रहे हैं, kept in monkey cages, yaar, and put on display. And you put it on social media with names. This is barbarism. That is for selling, sir. This is barbarism. Nobody will support them. That is the mistake they did. The Arab Republic, United Arab Republic, तो 67 से ही defunct हो गया. It became defunct because they got a thrashing. Naveen says, shouldn't we use this to shut down ecosystems that support extremism and terrorism? There's a consensus within the West, little chance for bad international press. नवीन जी यही कह रहा हूं मैं. The first thing is AMU, बंद कर दो. होगा नहीं, लेकिन पता है ये भी.
धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। जेएनयू आ रहा है ना सर, कमल सिब्बल साहब आए हैं वहां पर, वो वेरी स्ट्रेट शूटर, ही इज नॉट अ ही लाइक सारियान मतकाल थपाक खत्म। In your global previous map session you talked came about to no Israel. redrawing the maps of the Middle East, sir. नहीं, उसमें तो इजराइल था, very much there. वो थोड़ा shape It change is हुआ the ना, I think Lebanon. No, you're missing out. Israel very much was there. Lebanon was stretched and Syria lost its coastline. Yeah. It became Greater Lebanon. Greater Israel Lebanon. was very much there. JJ says this incident gives justification to annex Gaza and act against Iranian nuclear ambitions. Nuclear ambition तो अभी भी रहेगा उसका, but अब तो the sanctions will stay and it become even strong. And till this government falls, I think the Supreme Council may take a call and bring in a moderate as a president. Falling of the hardliners, I don't know, it will take a civil war. What will it take? How will democracy come? It's a long shot. But maybe next 2-3 presidents that you see in Iran will be the moderate ones. Like, क्या था, Rafsanjani and all this. Yeah. Moderate ones may come to cool the temperatures. And now Hezbollah has said no. The moment Hezbollah says no, they lose control of Iraq also. Yeah. It was elements of Hezbollah which were providing them support into Iraq. We lose Iraq. So they will have to sit down after this and take a deep call ki karna kya. Because it cannot be business as usual as far as Iran is concerned. Iran is going to take one of the worst hits. Along with that, Qatar will take a little time because of its gas. हम तो already divert कर रहे हैं, so that diversion to Eastern Africa may become faster. Okay, and once Qatar's importance on us and others start going down, then Qatar will get sorted out. Arun, thank you so much. He says, sir, why do you think it took so long and a COVID for strategic powers like the global deep states to realize China is a single point failure? यार जब तक चाइना से पैसे बन रहे थे उनको, लाइक आई हैड अर्लियर सेड ना, द क्राउन काउंसिल को और कुछ मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। तो पैसे उस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग में चाइना दे रहा था पैसा, सो दे वर हैप्पी। कोविड में उसने ही डिडंट लिसन टू एनीबॉडी एंड ही शट शॉप। सो आई एम श्योर द क्राउन काउंसिल एसेट्स टुक अ डीप हिट. So that's how the asset management and all are walking out from there and coming into India. So it took that boost. China would have been a failure, but they were not interested in whether China is a failure or not. Their interest was मेरे को पैसा बन रहा है कि नहीं. I'll give you a simple example. Before iPhone came here and started making here, I think it was iPhone 10 or iPhone 11, इसका आया था details. IIM Bangalore had worked that out. The actual landed cost along with commission at the shop for the i10 Pro or i11 Pro tha, was 40,000 rupees. Making cost, transportation charge, commission to the dealers. So at the dealer, the MRP should have been 40,000. The landed cost, the dealer's cost at that time when you went to buy the phone was close to 1,30,000. That's the kind of profit these people were making. And so if the hedge funds had put money into Apple, look at the kind of money that they were going to be making. And 20% used to be with China and the rest used to go to Apple. That's how Steve Jobs made all his money.
Even today, Yes. they are making it in India, is selling it to about 70,000-80,000 to close to a lakh. It actually doesn't cost that much. It's the profits that he's making so much. So they were interested in this कि पैसा आए. अब पैसा नहीं आया, वहां से डूब रहा है, वो पूरा डूब गया, पैसे नहीं आ रहे. तो उनको पता है कि इंडिया से पैसे आएगा, तो दे कमिंग टू यू. इंडिया बोल रहा है हम उतना पैसा नहीं देंगे, वो कहते हैं ठीक है, मरता क्या ना करता, जितना पैसा मेरे को मिल सकता है इंडिया से मैं बनाऊंगा. तो बना रहा. सर स्टेबिलिटी है ना, एक वो भी तो डिस्कशन है कि साहब do you go for high profits or high stability? So you have better profits and stability, and that is why now the old order has to go, because the old order is trying to create instability. उसमें ये सारे लेफ्टिस्ट फेफ्टिस्ट सारे जितने ये सारे जिसको मैंने बोला था वो आ जाते हैं उसमें. लाइन लगाओ सारे, single file. Cargo crew, thank you so much for your contribution. Jack Sparrow, thank you so much for your contribution. Taliban public account was set up in a few weeks before the attack, gained massive following by posing as a troll, but now it's shown its true color. अब उनको भी डर लग रहा होगा ना. Americans never resorted to this kind of bombing, or even the Russians didn't resort to the Dresden type of bombing. But if push comes to shove, but तालिबान की यूटिलिटी खत्म हो गई. इंडिया के साथ तो उसने एम्बेसी भी बंद कर दिया, और क्या करेगा. इंडिया इज शिफ्टेड टैक टू वेस्ट एशिया. दैट्स द एंड ऑफ तालिबान. क्या करोगे तुम, कौन कितना पैसा दे देगा, क्या कर लेगा. वो तो है. Average middle class gamer. Thank you so much. Good evening, General Ryan. Aadi, B-52 has started sorties along with F-35's videos. I think she didn't on X. I think US didn't have an option of sending a fleet. Russians hardly have any aircraft carriers and all. यार उनके अभी है नहीं, बट वो बॉम्बिंग तो शुरू कर देंगे. वो फ्लीट से तो F-35 वगैरह तो है, बट F-35 का बॉम्बिंग का उतना नहीं है जितना B-52 का है यार. दैट्स व्हाई आई सेड go to Google, search that Dresden bombing और उसका पूरा पढ़ो. What were the kind? It were bombers. F-35 doesn't carry that kind of bombing load. Load नहीं, it's precision weapons. JBJP आदि भाई गुरजोत ग्रेवाल की पार्टी का प्रश्न का उत्तर तो दो. वो मेरा उत्तर नहीं देता, मैं क्यों दूं उसको. Mukesh ji, thank you so much for your contribution. Mandar Kelkar, thank you so much once again. Jai Hind sir. Seems like this is the only beginning by Israel. Bharat needs to make sure that to build something, pick something not picked by any radar to protect seashores to avoid such attacks. True. अभी तो Coast Guard and that surveillance. See, there is a huge amount of surveillance setup that has come in for your coastline. And it is a multinational surveillance center. It's called a Fusion Center, which is located in Gurgaon. There is one in Western Pacific also, but Gurgaon covers everything. So now ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा. You will track all ships. Because जिसका है वो भी आ जाएगा, और जो ब्लैक है, मतलब उसने अपना IFF बंद किया हुआ है, उसने अपना चार्ट प्लॉट नहीं किया, वो भी पकड़ा जाएगा उसका प्लॉट, और वो भी आ जाएगा. So there is enormous amount. जो 2611 टाइप किया था वो अभी चांसेस बहुत कम है, करना मुश्किल है उसको. बहुत मुश्किल है. Last few sir. I'm not talking of anybody coming from outside, भाई साहब. I'm talking inside itself. बहुत बैठे हैं आपके अंदर. Average middle class gamer once again. What will be India's position when shit hits the fan for Iran? Watch. जाने दो यार. उस देर डूइंग सानू की है. मेरे को क्या इफेक्ट पड़ता है. मैं तो तेल भी लेता नहीं हूँ उसको. By the way, guys, General Prabdeep Singh has written a book. It's titled Sanu Ki. तो आप देखो. सानू की है. Absolutely. They have brought it on their own head ना. चुपचाप बैठे रहो यार, तुमको. Nomad, thank you so much. By chance भारत में ... इंडिया जीत गया तो फिर भारत का क्या स्टैंड होगा वर्ल्ड में.
तो आज तो डिक्लेयर कर दिया ना उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो होगा स्टैंड आपका। और तो बेड़ा अवस्थी गर्क हो साहब, जाएगा, लेकिन 50 साल पीछे जाओगे, देख लो। Avasti sab, what does Russia gain from Hamas attack on Israel? Is it possible to have a deal with China? No, they have no deal with China, and gain ये है कि वो यूक्रेन का लड़ाई में what he wants he'll get. So, INSTC in cold storage. ये Chitnis साहब wrote it right at the beginning of the conversation when we starting to have it. Will trade with Russia I follow don't through need or will it be kept INSTC for on? trade with Russia यार. Trade with Russia is still going. INSTC तो एक आध बार कभी दिखा देते हो demonstration के लिए. Your trade in Russia doesn't follow INSTC. It is now the new this thing is coming, na sir? Chennai Vladivostok. या वो जब खुलेगा तो वो जाएगा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक। अभी जैसे आपका मैरीटाइम ट्रेड चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आईएनएसटीसी तो दिखाने के लिए, आईएनएसटीसी फॉर ट्रेड विद रशिया इज नो गुड। ट्रेन कैन नॉट मैच योर मैरीटाइम ट्रेड, इट कैन नॉट मैच। शॉर्ट हॉल ट्रेन देन गोइंग विद अगेन योर शिप्स एंड ऑल इज ओके, बट ट्रेन शिप एंड देन ट्रेन, INSTC would have been better for a trade with Central Asia or trade with Caucasus. So Pritesh ji says, ask for China. They're behind the killing of Niger. Jennifer Zeng reported it. I'm waiting for the mail back. I want to talk to her. अभी बोल रहे हैं, चाइनीज ही बोल रहे हैं कि निजर का किया था टू स्पॉइल रिलेशंस दिस दैट, बट गधे हैं रिफ्लेक्सिव। अगर किया है तो गधे हैं। रिफ्लेक्सिव एक्शन में दी बिगेस्ट पप्पू हु इज द लेफ्टिस्ट का फेस, उसी को आपने पकड़वा दिया बोल के। तो लेफ्टिस्ट वाले और भी बैकफुट पे चले गए हैं इसके बाद। सो वुड चाइना डू दैट? आई डोंट थिंक सो। आई वोंट पुट इट अक्रॉस आईएसआई डूइंग इट। इतना दिमाग उनमें नहीं है, बिकॉज आपने एपीएस सिद्धू को पकड़ लिया तो उसके चेन में जितने बंदे हैं उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे किसी देश में बैठे हो, उन सबको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड कैनेडा हैज अ लॉट ऑफ आईएसआई एजेंट्स। वुड चाइना हैव डन इट टू पुट इटसेल्फ एंड इट्स लेफ्टिस्ट पीपल ऑन द बैक फुट? इफ Xi Jinping has done it, then he is also a pappu. 2 more questions, sir. After that, I'll take 2-3 comments because people have written such beautiful comments. I want to take that up. And we will end the show here. Ask Aadi, isn't this the right time for China to launch an attack for Taiwan? मिलिट्री पीएलए दिल्ली में कह रखा है हम तैयार नहीं है, किससे लड़ेगा? वीडियो देखो हमारा। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार बाहर गया, 3 दिन के लिए गया, वापस डालियान खींच के लाना पड़ा उसको वापस है, वापस अंदर पड़ा हुआ है, वो निकला नहीं है उसके बाद। क्या बात कर रहे हो? अब पीएलए दिल्ली में अगर है, दैट मींस देयर इज अ क्लियर फिशर विद इन द सीएमसी एंड ओपनली कह रहे हैं कि ठंड रख, हम तैयार नहीं है लड़ने के। आई डोंट थिंक, आई स्टिल से, because he has done a lot of build up in Fujian, which is next to that Kinmen Island group of Thailand. So he may take that and may leave it to legacy कि भी मैंने first step ले लिया ताइवान के, बाकी तुम देख लोगी। बाकी तुम लोग देख लो। Gurjot says, is this the beginning of the end of radical Islam as we know it today as part of a larger global financial reset? Yeah, it is. Now radical Islam, I think, has run its race. People within Islam itself will start questioning it. This could be something like the Inquisition period, where people within Christianity started questioning the radical things that Inquisition was doing. So this is the same thing that is going to happen. It will be a churning within the Islamic society, because people will be asked very clearly now, either this way or that. Either you are radical and stay in the medieval 12th century with nothing with you, or come with us and develop. And I think that is going to happen. But it won't happen overnight, but it will surely happen. I covered thank it. Going to be stronger. We covered this. Thank you so much. It is not Saudi Israel, please. No, it is India, Saudi Middle Israel. East, Europe. Yeah.
It is India, Middle East, Europe. One of the IMEC. routing that we are looking at is coming into Saudi Arabia, but it is not just Saudi Arabia, whole of Middle East you want to cover. And then it gets out from Haifa to go towards into the Mediterranean, Israel, and go in towards Europe and other places. And it will hit Greece and whole lot of places. So it's sort of a regional network. Europe le lete hain because Greece and all these are part of Europe. Israel also now people look at it as part of Europe because Asian federations, all these Muslim countries removed Israel. Otherwise, Israel used to be part of our Asian Games. आपने हटा दिया उनको. So Israel itself now is being linked with Europe, and others are Europeans. Germany, moment you hit Italy and Greece, you are in Europe. So remember, it's not Saudi Arabia, it is Middle East, and Middle East mein Israel is part of Middle East. Right, Indie Gal, Hamas just said it's open for truce. I haven't received any such thing. Thank you so much for your Even contribution. if they have said it's too late now, it's too late. Yeah. The first thing they will get all those people who did all those things, leke aa jao, and they're going to be shot. So it's too late. Walking, talking dictionary, sir. Then Mayaji says, what you say about the WEF warms our hearts. See, everything runs its path, and it runs its course. It is when you are running in the course, you think that my course is unlimited. It's not that. Yes, sir. And Batra ji ka समय ek का छोटा सा चक्र भूल question है, जाते हैं. समय का चक्र भूल जाते हैं सब. Batra ji ka ek question hai, which I find very interesting. This I want to take as the last one. By emerging pattern, where shall be the next flashpoint created? Is Iran on the menu, sir? We don't know. Could be. But like I think Iranians are again good in their geopolitics, the people, not the hardliners. And they may push for a change. And like I said, the next 2-3 presidents you may see would be the moderate and having more say. So the Ayatollah may issue a decree and move this chap out and get a... Because otherwise the people will suffer. People will suffer. The next flashpoint I see is either Taiwan or India, if it happens. If it happens. Because wo pagal, he's a megalomaniac. Will he be satisfied? Because you see, in military we have a term called notion of victory. What is it that you achieve? Will you say that I am victorious? I feel that he will go for the Kinmen Island. Would he go for some other place in India? Can't say. Because a megalomaniac is unpredictable what he will do. After this, maybe Iran if they don't agree. But then Iran मतलब किधर hit करोगे? ये Gaza Strip तो एक छोटा सा जगह है, known place, target which you can sort out. Where will you go in Iran? Tehran? किसको target? That's $1 million question. You know, when you hit Gaza, Hamas is finished. Is there a particular place in Iran that you hit where Yes, Iran is all over finished? the place. Probably hit the IRGC headquarters. What else? फिर भी क्या होता है? Doesn't make a difference. Next set of IRGC आ जाएंगे वहां पे. So, as far as this is concerned, this is going to have a reorganization of all these things in Middle East, and for quite a period of time, Iran, Qatar, and Turkey will be the outliers. Nobody is going to touch them. So, and it is going to impact Erdogan very badly. Very badly. Very badly. For all you know, he may be thrown out of NATO also. EU में तो आने नहीं दिया. They might be moved out of NATO. I don't know if he'll be thrown out of NATO, sir. I think he's going to be thrown out himself.
Turkey they नेटो need. से हटा देंगे उसको, इंसरलिक नहीं, से सब Turkey निकल they जाएंगे. need, sir. Turkey they need. They don't need Erdogan. See, to put pressure, you pull out all the assets from Incirlik अच्छा. and place it ऐसा. elsewhere. Place it elsewhere. Turkey you needed for domination of the Black Sea. Once you have done the deal with the Russians and you've given him all that complete bulk of the western coastline of Black Sea, उसके बाद तुमको टर्की की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर टर्की को दबाने के लिए आपको जगह चाहिए. Once Hamas is sorted out, supposing you took Israel into the NATO and place him there, place your assets there. ज्यादा दूर तो नहीं है, बस आपको एजियन सी ऑफ मरमरा क्रॉस करना है, and you are on Black Sea. It's not too far. Haifa itself is a victualling base for the Mediterranean fleet whenever they come there. It's a victualling base for NATO. So if you make Israel, then to everybody will be scared to do anything in Israel. Because then clause 5 की clause article 7 article 5 I think जो होता है, if any country of NATO is attacked, everybody will launch an attack. See, so you got to see. I'm just guesstimating because the way Erdogan has been behaving. Abhi, don't forget the Americans shot down their plane over Syria. Drone He was trying to hit the Kurds there. They shot down his plane. They've told him, you do it again, we'll already hit you now. Yeah, so these are evolving events. You never know. They may put pressure on him and say, you're no longer part of NATO. Then what happens? Sir, I mean, I must say this was Erdogan brilliant. will be Maza aa gaya. Sorry? Then Erdogan will be on the back foot. That is there, sir. Yes. I must say, sir, we still have 3,000 people with us. It's a wonderful evening. Thank you so much for coming in at such a short notice. मैंने सर को literally खींचा है, मैं सर आ जाओ आज, please आ जाओ, मेरे को कुछ करना है, because I wanted to discuss the back end. So thank you, sir. Thank you so much. It's always a pleasure talking to you and learning from you. Till next time. Most welcome. I enjoyed every moment of it, and I thank everyone who have stayed back. 3,000. आप लोग, as they say ना, चश्मा हो. Chashma, I hope you understand the spring, the eternal spring. So I can drink from it and at this age get my energy back. Thank you. Thank you, sir.